Okay, a very good evening to one and all, and welcome to this YouTube live session from Ekoching and myself, Prashant, head mentor and co-founder at Ekoching. And I train students for verbal ability and reading comprehension. And the idea, the topic of the session today is how to develop your vocabulary. So the major concern which comes is, sir, vocabulary develop kaise kare? That's what the major concern is, because it's not only because of the kind of questions we are talking about. I mean, if we talk about, let's say, there are direct questions related to synonyms, antonyms. If I talk about exams like SNAP, if I talk about exams like NMAT, if I talk about exams like IFT, or for that matter ZET sometimes, or TISNET, in सब exams के अंदर direct questions vocabulary के आते हैं. But more than that, the idea is, sir, that if we want to, let's say, crack reading comprehension for that matter in CAT, wherein 80% of the paper is RC based. So if I talk about reading comprehension, even there also, we won't be able to understand, the passage if we are not able to understand the words. We are not able to eliminate the options if we are not able to understand the words. So vocabulary is like oxygen to my verbal ability and reading comprehension section. So how to deal with it, and the very important thing is how to develop a vocabulary. So in this session today, in this live session today, I'll be talking about 8 techniques to develop your vocabulary. And I'm telling you, try to inculcate these habits for your vocabulary building. And I'm sure that if you do it religiously, if you do it regularly, I'm sure I'll come out with flying colors for sure. So with this, let's start our live session on how to develop vocabulary. So when we talk about vocabulary building, these are the 8 things or 8 ways for vocabulary building, right? And let me start with point number 1, which is develop reading habits. Yes, so that's how your expression will be when you start reading, when you come across new words. This is the kind of expression you will get, that okay, this is what I don't know, this is what I was ignorant about, right? And that's what vocabulary. So develop reading habits. I am telling you, this is the best way with which you can develop your reading habits. There's nothing else. देखिए, मैं आगे जो बात करूंगा, आई मीन आई हैव जस्ट ट्राई टू प्रायोरिटाइज, कौन से वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शायद मैं बाद में भी कर सकता था, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, all other things are related again to reading only, because the moment you come across the word, then only you will try, remembering the words, relating the words, mnemonics, all these things is secondary. पहले आप रीडिंग करने की आदत डालें, because वो सबसे इंपॉर्टेंट है. रीड एनीथिंग, read any genre you like. Start reading newspaper, start reading articles related to finance, related to sociology, related to biology, related to genetic engineering, related to polity, economics, what are happening in the things around, and try to get those jargon in place, try to get that word in place. Or मैं बता रहा हूँ, I don't know what kind of colleges you will be into. I don't know what kind of things you'll be doing further, but एक चीज मुझे इतना पता है, अगर आप अच्छे कॉलेज के अंदर जाएंगे, so let's say if you are landing in IIMs, if you are say landing in MDIs, XLRIs, if you are landing in IFTs or any other college, reading आपको करना पड़ेगा. Talk to any alumni, right? Talk to alumni. And in my upcoming sessions, I'll make sure that I'll be talking to some of the alumni also to make you guys understand what it is, why reading is important, right? So if you talk to alumni from these esteemed colleges, वो आपको क्या बोलेंगे कि यार आप किसी भी कॉलेज के अंदर चले जाओ और कुछ करो ना नहीं करो, आपको रीडिंग तो बहुत करनी पड़ेगी. सो मेरा सजेशन है अभी से वो रीडिंग हैबिट्स डालो, बिकॉज रीडिंग आपको हर तरीके से हेल्प करेगी. और कुछ जिंदगी में हो ना हो, रीडिंग आपको जरूर हेल्प करेगा. सो डेवलप or cultivate reading habits. That's point number 1. If you want to have a good vocabulary, रोज एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 घंटा इसको देना चाहिए. सेकंड इज प्ले वर्ड गेम्स, राइट? इंटरनेट का जमाना है गाइस, राइट? पहले हमारे टाइम में शायद इतना ज्यादा यूसेज नहीं होता था. ऐसा नहीं बोलूंगा इंटरनेट नहीं होता था, ज्यादा बूढ़े नहीं है, बट द पॉइंट इज जमाना नहीं होता था, राइट? कि हम इतना इंटरनेट पे डिपेंडेंट थे और हमें पता होता था कि आई मीन सच अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट, राइट? यूज दैट इंफॉर्मेशन, उसको अच्छी तरीके से यूज करो. प्ले वर्ड गेम्स, राइट? आपके पास अभी ऐप स्टोर है, यू हैव योर गूगल प्ले स्टोर, वहां पर काफी आपको वर्ड गेम्स मिल जाएंगे. एंड यू डोंट हैव टू,
आई मीन स्पेंड अ सिंगल पेनी, राइट? जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है, एक मैरियम वेबस्टर करके वेबसाइट है, यहाँ पर यू कैन गेट वर्ड गेम्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड, क्विजेस. दैट्स द काइंड ऑफ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. प्ले दिस, गिव 5 मिनट ऑफ योर्स, 5 मिनट देने, ज्यादा नहीं देने, ये आप दे सकते हो. सो ट्राई टू प्ले वर्ड गेम्स. Or the moment you start playing the word games, automatically the things will get in your subconscious mind. That is something which is very, very important. Next is use flashcards, right? When we talk about using the flashcards, this is how you can remember the information as well, right? So हम जब बात कर रहे हैं कि word game खेलो, so word game से आप बनाना शुरू करेंगे, वो ऑटोमेटिकली शब्द कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा. फ्लैश कार्ड्स, सो यहाँ पर अगर देखो मैं फ्लैश कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, सो कमराडरी इज अ वर्ड मैंने लिखा हुआ है, पीछे मैंने उसकी इमेज डाली हुई है, विच मीन्स फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, फेलोशिप. फ्लैश कार्ड अपने पास रखो. फ्लैश कार्ड आपके पॉकेट में रख सकते हो, फ्लैश कार्ड अपने बैग में रख सकते हो, फ्लैश कार्ड अपनी बुक्स में रख सकते हो, फ्लैश कार्ड अपने रजिस्टर में रखो. एंड ट्राई टू यूज दीज फ्लैश कार्ड्स ऑन अ डेली बेसिस. एंड यू कैन कीप इट रेपिटेटिव. आई मीन नॉट नेसेसरली दैट you have to keep a daily new flash card. For example, you are keeping, let's say, 150 or 200 flash cards. You can just keep on repeating them, right? Quizlet is a website जहां पर आपको फ्लैश कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे. Again, you don't have to spend a single penny on this, right? So do that. ये सारी चीजें आप लोग करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. So हमने स्टार्ट किया था रीडिंग कीजिए, रीडिंग के बाद मैंने बोला था वर्ड गेम्स खेलिए, फ्लैश कार्ड देखिए. नेक्स्ट आई एम गेटिंग इनटू वर्ड ऑफ द डे. आपको कई वेबसाइट से मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, टाइप कर लो, किसी भी वर्ड ऑफ द डे फीड को सब्सक्राइब करके रख लो, राइट? अगेन मैरियम वेबस्टार से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, मेल्ड का मतलब होता है टू मिक्स टुगेदर, राइट? सो ये मेडल नहीं है, ये मेल्ड है. meddling is interfere, melding is to blend. There is a difference, right? So word of the day, this is something which you should start doing it. Word of the day के साथ आप थोड़ा daily basis feed को subscribe करो. This is again the next thing जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से vocabulary develop करने के अंदर help कर सकता है. The next is mnemonics. Yes, there are many language faculty और many teachers will talk about कि सर mnemonics से आप बच्चों को पढ़ाएं या mnemonics से आपको बोला जाएगा कि आप preparation कीजिए, because here if you see in the image itself, mnemonics and memory, they go hand in hand. The more you use mnemonics, the more it will helpful to develop your memory. And that's how human beings are evolved. To be very honest with you, we are evolved to have a ready access to many of the things. So why to get into that pain of trying to remember the information every time, when you can just kind of associate it with let's say songs, with rhymes, with the Bollywood actor, with Bollywood actresses, with Hollywood actresses, where you can do with your let's say relatives, with the society around. So mnemonics का मतलब क्या है? आपको वर्ड के मतलब अगर याद नहीं हो रहे हैं, उसको आप रिलेट कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था यहाँ पर कैमराडरी का मतलब बेसिकली क्या होता है? फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, फेलोशिप. एंड व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ mnemonics is like you can relate it with, let's say, वो दो लोग, those two friends who share kamra and dari with each other, shares a good camaraderie. Remember your hostel days, right? So those friends who share kamra and dari with each other shares a good camaraderie. That's the kind of association which you can use as far as mnemonics are concerned. So that's next way, or the next thing, how you can try to get into vocabulary building, remember the words. The next is use these words now. The point is, agar aap initially meri sari slides dekhoge, I have talked about reading karo, naye words milenge, word of the day dekho, naye words milenge. I have discussed about news of the word of the day देखोगे नए वर्ड मिलेंगे, puzzles खेलोगे नए वर्ड मिलेंगे, mnemonics. और when we talk about using these words in communication, oral or written, now मेरे को words तो मिल गए, how do I remember? Right? Mnemonics is one way of it. The second is use these words in your communication, oral or written. Whether you are writing, whether you are speaking to someone, I mean, don't hesitate. आप words बेशक गलत context के अंदर use करो. Believe me, I'm telling you, right? No language faculty will say like this. आप गलत context में use करो, that's absolutely fine. At least आप याद तो करोगे. और as of now, इस पूरे YouTube live का मतलब ये है कि आपको अगर जो भी management exams convert करने हैं, वहां मुझे मतलब याद रहे. यहाँ पर मैं context की बात नहीं कर रहा हूँ as of now. So that's why start using this in your oral and written communication. Make journal out of it, right? Start writing these words.
इन वर्ड्स को लिखना शुरू करो, राइट? यू हैव योर छोटू सा नोटबुक, छोटू सा एक डायरी आपके पास होना चाहिए, काइंड ऑफ अ पॉकेट डायरी. द it's your pocket dictionary, and you don't have to mug up the words, right? मैंने ये चीज यहाँ पर नहीं लिखी है, I forget writing this down. I've seen students डिक्शनरी खोल के बैठ जाएंगे, चलो डिक्शनरी में से वर्ड्स याद करते हैं. I've seen students बुक्स खोल के बैठ जाएंगे, मटेरियल खोल के बैठ जाएंगे with whatever they are preparing for, कि चलो वर्ड्स याद करते हैं. ऐसे वर्ड्स याद नहीं होने वाले हैं. You can't mug up the words. What you can do is just go through those words, I mean, on a daily basis. So make journal. That pocket should be there in your bag, in your pocket, and that's a pocket dictionary. एंड उस पॉकेट डिक्शनरी को आप बस देखते चलो, मैं बता रहा हूं वर्ड्स आप कभी नहीं भूलोगे, वर्ड्स आपको याद होना शुरू हो जाएंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट द लास्ट इज लिसनिंग. अभी तक हम लोग वर्ड्स की रीडिंग के बात कर रहे थे, याद करने की बात कर रहे थे. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसनिंग ऑल्सो. लिसन टू सम क्वालिटी स्टफ. लिसन टू, लेट्स से, go to channel like BBC World, go to channel like World is One, go to channel like NDTV News for that matter. Listen to some good English, right? Go through web series. I'm sure you guys are crazy about web series, but see some good quality web series, some light web series, right? No Mardhad and all. I don't like it. Where, more than, action, you have content to listen to. Right, to go to YouTube and just type in, or go to Netflix, type in documentaries, right? Type in history ke bare mein. Listen to, let's say, National Geographic, Discovery. You will listen a lot of content, and the moment you listen those words, it will automatically help you to develop your vocabulary as well. So these are my 8 ways, right? I'll just revise it. What are my 8 ways to remember the words? So I said is develop reading habits, play word games on daily basis, use flashcards, right? Quizlet पे जाके देखिए. Word of the day, this is what you can do. Use mnemonics, use these words in oral and written communication, make journal, and at last listen to some quality stuff. This is what you can do for developing your vocabulary. With this, me, Prashant Sugandh, signing off from today's live session. Thank you, and keep watching Ekoching.